Go on Google, search Google AdWords coupon. Okay, click on the first link itself. So on the first link, Yeah, this one? on the ad itself. And those guys who are seeing, so go down, scroll a little more. Here is the option of putting your email ID. Put your email ID, and everyone should follow her along with her. Okay, select I am not a robot. Get the offer code. Just wait. Everyone is on the same screen. As everyone fill up their email ID and clicking on it and get started, press 1 if you are able to do it, except Akash, because Akash is on phone. I'm also doing it. I'm also doing it on the phone side by side. Okay. I don't know. Maybe on the mobile interface, the options will be coming different. So you have to be a little vigilant about it. Sure. Rest of the people, press 1 into the chat box quickly once you are done. You have reached to this screen. I got a mail also saying that 2000 redeem your ad credit. Should I follow that link? Yeah, you will get an email, and there will be a coupon code that we will be using later on. Guys, follow the process properly. Otherwise, you will be redirected here and there. There are hundreds and hundreds of links are there. Otherwise, you will be getting this course and some other. Can you go on the same tab? Your screen is shared. I will tell you how to do it. Okay. Click on get started. Rest of the people also. Okay. Enter your business name. Business name, as in I don't have a business, so what should I enter? Wait. Don't type it. Go down, scroll down. Go click on your picture. Click on plus account. Click on create a new account. And those who are still creating an Express account, click on switch to export mode. Click on switch to export mode. Is everyone getting the same interface which he is getting? This one? No, Jatin. Yes or no? No. Everyone is on the same page? Yes, press 1, press 2, anything. Jatin, yes. The last thing that you said, right? Get started. Should I click on get started and then the screen will come, right? Yeah, correct. Okay, done. Okay. Just below all these boxes, you are seeing an option, create an account without a campaign. Click on that. Everyone, please follow this step along with the things happening. Okay. Otherwise, there will be the same step I will be explaining to each one of you again, one by one. Okay, it doesn't make sense. So it's better, let's follow all of us step in sync. Okay, whenever I press whenever I move to next screen, you have to type 1 if you have moved. If you haven't, then press 2. Okay, so I want to know whether you are on this screen or not. Type 1 or 2. Perfect. Click on submit and then tell me, then for sure you will be on the same screen. Click on submit, Geetu. Perfect. Click on explore your account. Congratulations everyone, you have created your Google AdWords account. Thank you Geetu, thank you Arnav for the support. And I have told you how to create a Google AdWords account. Okay. Thank you everyone. So if everyone is on the same screen, press 1 into the chat box quickly. Can I share my screen so that yeah, I can show Geetu, please unshare your screen. Thank you. Yeah, go ahead. This is showing. It's the same thing. Yeah, it's the same thing. Okay. Can you click on tools and setting on the top? On the top, yeah. Yeah, perfect. It's the same set. No issues. You are on same screen almost. Okay. Now let me share my screen. Okay. So now everyone is on Google AdWords. Let me also get on Google AdWords. So everyone has created their own Google AdWords account. Jatin, I just missed your last 2 lines. Can you please repeat? I said you have just created your Google AdWords account, nothing else. Okay. It's opening, just wait, please. Okay. Now the next thing, which is critically very important, how to create a campaign. For creating a search campaign, the basic thing required is keywords. Okay. You should know which keywords you can use, which keyword you want to run a campaign, which keyword you don't want to run a campaign. Okay. The basic requirement for creating a search campaign is to identify the keywords. Okay. For identifying the keywords, what you have to do is you have to use a tool.
which tool you have to use? You have to use a tool called tools and settings and then keyword planner. Okay, under planning sheet. Okay, under planning tab, you will find keyword planner. So everyone click on keyword planner and guys do along with me. Okay, so click on keyword planner and I will be explaining it. So if you get stuck or you are not able to do it, you can cover it up over here in that time when I'm explaining you. Second is once you click on keyword planner, you will get two options. Primarily, these two options are first, discover new keywords means when you have no idea about that industry, but you want to know which keyword, which you don't know which keyword to use, which keyword not to use, you don't have any idea. So you will use option one. Second option is when you are running a campaign for that industry or the account is like 10 years old or 1 year old or 1 month old, you know which keywords are there. You want to check still the searches are same or has changed, you will use the option 2. Okay. For new keyword search, you will use this. For search volume, you will use this. नितिन, ये कीवर्ड प्लानर कहाँ से आएगा? टूल्स में टूल्स एंड सेटिंग्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कीवर्ड प्लानर का. आप साथ साथ फॉलो कीजिए. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू stop the flow and then tell you. Okay, then we will go on discover new keywords because we don't know about the industry, so we will do a keyword research. ठीक है. अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कल अकाउंट स्ट्रक्चर में, we should know the hierarchy structure of it, then only we can make the ad groups and make the campaign based on that. Let's suppose क्या suppose करें हम, let's suppose I'm running a campaign for digital marketing course. Okay, ठीक है. सिंपल प्रोडक्ट मैं ऑल ओवर इंडिया रन करना चाहता हूँ इस कैंपेन को, तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया और डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश और मैंने सर्च करके. अब ये एक एड ग्रुप भी हो सकता है और ये हो सकता है पूरा कैंपेन. इसमें कई एड ग्रुप भी हो सकते हैं. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने एड ग्रुप होने चाहिए या ये सिर्फ एक ही एड ग्रुप में आ जाना चाहिए? हाउ टू डिफरेंशिएट इज यू हैव टू, वन ऑप्शन इज या तो आप यहाँ पे जाके सारे कीवर्ड्स एक एक करके आइडेंटिफाई करो और इनको ग्रुप्स में डिवाइड करो. सेकेंड ऑप्शन इज यहाँ पे रिफाइन कीवर्ड्स आ रहा है. आई एम नॉट श्योर आप सबके में आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ब्रांड एंड नॉन ब्रांड. ठीक है, तो सचिन एक्चुअली हम ना आपकी स्क्रीन देख रहे हैं, तो मैं तो नहीं कर रही हूँ अपनी स्क्रीन में कुछ. अच्छा ठीक है, आप मेरी स्क्रीन देखो, फिर आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू डू इट. ठीक है, आप सब लोग मेरी स्क्रीन देखो एंड देन डू इट आफ्टर 10 मिनट्स. ठीक है, याद रखना मगर स्टेप लिखते रहना कहीं पे. वैसे तो अब बहुत सारे स्टेप आपको करने नहीं है, सारा काम एक ही स्क्रीन में होगा. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स दिख रहे हैं, उसके अलावा सर्विसेज वाले कीवर्ड दिख रहे हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्लेसेस, बहुत सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं. ठीक है, ये एक रिफाइनिंग तरीका है. सेकेंड रिफाइनिंग तरीका यहाँ पे एड ग्रुप आइडियाज, कीवर्ड आइडियाज के जस्ट नीचे एड ग्रुप आइडियाज. उस एड ग्रुप आइडियाज में जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट क्या दिख रहे हैं? एड ग्रुप्स दिख रहे हैं. ओके, ये डिफरेंट एड ग्रुप्स क्या है? जैसे एक एड ग्रुप का नाम है प्रोग्राम ऑनलाइन. तो इस प्रोग्राम ऑनलाइन में क्या होगा, इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें कॉमन टर्म होगा प्रोग्राम ऑनलाइन. तो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, प्रोग्राम ऑनलाइन, बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन. ओके, प्रोग्राम. ठीक है, ऑनलाइन भी आ गया, प्रोग्राम्स भी आ गया, तो आगे पीछे करके कई कॉम्बिनेशन होंगे. ये एक एड ग्रुप हो सकता है आपका. सेकेंड एड ग्रुप हो सकता है मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग. मास्टर्स वर्ड आएगा, मार्केटिंग और मास्टर्स. नेक्स्ट में कोर्स नियर बाय में कोर्स कॉमन वर्ड होगा, रोहिणी कॉमन वर्ड होगा, ऐसे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एड ग्रुप्स गूगल ने बनाए हुए हैं. गूगल ने आपको अप्रॉक्स 110 एड ग्रुप्स बना के दिए हुए हैं. आप उन एड ग्रुप्स को यूज कर सकते हो. ठीक है,
कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही भी हो सकता है वो तरीका, गलत भी हो सकता है, मगर सही और गलत में बस आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, चाहे आप गूगल के एड ग्रुप्स का ग्रुप्स बनाओ या आप अपने यहाँ पे फॉर्म करके बनाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी कीवर्ड्स आप एक एड ग्रुप में सेलेक्ट कर रहे हो वो हमेशा सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, एक है डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट, ओके दैट शुड नॉट बी हैपन। एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये दोनों अलग है। ओके आपको लग रहा है मीनिंग सेम है बट ये कीवर्ड्स अलग अलग है, तो इनको अलग अलग एड ग्रुप में आपको रखना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे रखना पड़ेगा, बट बिफोर दैट हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कीवर्ड सेलेक्ट कैसे करना है। ऐसा नहीं है Jatin, रैंडम सिलेक्शन। Hello, Jatin. Akash here. या I use anyway following the class. I had this doubt that you said that your ad campaign is digital marketing course, right? Under Yeah. that, you are finding different groups. So one was programs online, one was something else, one was something else. या Right? So correct. that will be subcategories. Correct. So Yeah, now ad campaign correct. is digital marketing course, and then you said if you want to do digital marketing certificate, then that will be a different ad campaign altogether, right? No, ad group. So the digital marketing course is ad group, is it? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज अ कैंपेन नेम, उसके अंडर एक एड ग्रुप में हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कीवर्ड्स, एक के अंदर हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स, एक के अंदर हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग इज मतलब इट्स नॉट दैट वी आर लुकिंग, मतलब दैट इज द industry that you're looking into. या But under that, करेक्ट, if it's only word, then it can be digital marketing one group, digital marketing like by word, मतलब letter by letter Yes. अगर होता है तो digital marketing course will be one group. Under that you'll have various subgroups. जैसे we are just trying to find out the keywords. The next one will be digital marketing certificate and so on and so forth. करेक्ट करेक्ट, Is that right? Okay. Okay. या करेक्ट, ओके ठीक है। अब बिफोर सेलेक्टिंग एनी कीवर्ड सबसे पहले आपको क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए कि किसी भी कीवर्ड पे तो आप ऐड नहीं दिखा सकते हो, करेक्ट। देयर शुड बी सम क्राइटेरिया, so there are primarily three criteria on which you select a keyword. The first criteria of that keyword is relevance, how relevant that keyword is, which can give you a business, because for every single thing you are paying to Google, okay, for showing ads and you are getting click on that particular ad, you are paying for every single click, you are paying, correct? So you can't generate a huge amount of traffic from paid campaigns or traffic which cannot give you a business, correct? You can't generate a traffic which cannot give you a business because you are spending money. If you're not getting return, then there is no point of running a campaign, correct? So in that cases, what you do is you select always keywords which can give you a business. You don't select generic keywords. So like the keyword which says that digital marketing course, this keyword can give me a business because I am providing a course and this keyword is about that only, correct? And if you look at Google digital marketing course, if Google is providing some course, then people will go to Google, na? Nobody will come to Jatin or nobody will come to XYZ, any other course, correct? Any other institute. So log usi ke paas jayenge, correct? So although this is a relevant keyword, but this cannot give me a business. क्योंकि जिसने गूगल सर्च किया वो तो गूगल का ही कोर्स खरीदेगा ना, वो मेरा तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि गूगल इज दी होम आइडेंटिटी, करेक्ट? इट्स अ बिगर आइडेंटिटी. So that's why you have to think, apply your brain to select keywords based on relevance. Relevance here means it should be relevant to your product and or service. At the same time, that keyword should have a capability of giving you a business, or where you can check the intention of the user is to buy your product. Okay, the intention of the user is to know about your product in detail so that he can buy it or she can buy that product. Okay, you can't select a keyword like this
marketing certification. Our course comes under marketing certification because it's digital marketing, correct? But people are searching for marketing certification. There are chances that some people are searching for offline marketing certification. Some people are searching for digital marketing certification, but we can't take a risk. Okay, so we will not select such kind of keywords. Have you got the importance how to select a keyword on the basis of relevance?